नमस्कार दोस्तों, आनंद टेक में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे पास एक HP कॉम्पैक्ट का एक लैपटॉप आया है। कस्टमर का कहना है कि ये हीट होके बंद हो जा रहा है। तो ठीक है, आपको मैं ये प्रॉब्लम डेमोस्ट्रेट कराता हूँ। पावर ऑन कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बायस में से एक मैसेज आ रहा है, द सिस्टम बायस हैज़ डिटेक्ट अ पॉसिबल इश्यू विद द कूलिंग फैन। और यहाँ पे एरर भी देख सकते हो, कूलिंग फैन 902। तो ये बायस ने डिटेक्ट कर लिया है इस लैपटॉप में फैन स्पिन नहीं हो रहा है या फैन में कोई दिक्कत है। तो आपको मैं डेमोस्ट्रेट कराता हूँ कि इस लैपटॉप में फैन को क्या इशू आया है, मदरबोर्ड में इशू है या फैन को इशू है। चलो लैपटॉप को ओपन करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, हमने मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया है। अभी इसको पावर ऑन करते हैं। यहाँ पे जंपर दिया हुआ है, उससे देख सकते हो एक बार स्पिन हो रहा है, वापस बंद हो जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा स्पिन हो रहा है, बंद हो जा रहा है, थोड़ा स्पिन हो रहा है और बंद हो जा रहा है। ठीक है, उसकी सर्विसिंग करेंगे। अगर सर्विसिंग में होता है तो ठीक है, नहीं तो नया फैन चेंज कर देंगे। इसी वजह से ये हमारा बायोस डिटेक्ट कर रहा है कि हमारा फैन जो है वो प्रॉपर तरीके से घूम नहीं रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्लीन करते हैं, बाहर निकालते हैं।